and she painted a fantastic poster that was admirable and appreciated among all the children. In this chapter, the 100 dresses, what does the topic suggest us? The 100 dresses means 100 types of dresses, garments. There are so many kinds of dresses like shirt, t-shirt, pant, and kurta, and so many dresses, you know well. So in this chapter, that girl has painted, 100 types of dresses on the poster, and we would have this story and its conclusion, you know, in the further meetings. So before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? How do we judge the people? On the basis of their money, wealth, or possessions? For example, if a person who has a lot of wealth, lot of money, and a lot of achievements, moreover, he is a rich person. However, he is wandering on the road wearing rags or worn out dresses like very wrinkled dresses, फटा पुराना कपड़ा पहनकर रोड पर वो घूम रहा है. So how do we judge that person? We judge by the external look of that person while he was wandering on the road. We do not know really about his wealth, his bank balance, anything else. So mostly it happens we judge the people by their look, wealth, money and possessions. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे जज करते हैं. दूसरी चीज, this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Okay, in this story, we are going to have a sensitive account of a poor young girl and how she was judged by her classmates. Wanda Petronsky. The name of that girl is Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petronsky. She goes to school with her American children. Okay, other American children. In an American town, there was a place in town. There was a school situated in American town, and she goes to school with other American children. These other children she Wanda as different in many ways. Can you guess how they react or treat her? Obviously, if a girl belonging to other nation goes to America for her studies and she goes to school over there, she'll find so many different children with different attitude and different color. Okay, for example, they look like more fair, okay, fairer than us. We are Indians, and Wanda Petronsky was a Polish girl. Okay, and she goes to school with other American children. So there was so many differences. What were the differences? You can understand it well. Look, gesture, posture, language, personality, attitude, and many more. Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. Okay, the Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. This is a statement, you can say article about Polish people. The immigrants arrived in 1608. 1608 में ये लोग वहां पहुंचे. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. लेकिन बात तो तब हुई जो लहर थी पॉलिश इमिग्रेशन का, प्रवास का, वो कब हुआ? अर्ली 20th century, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में. When more than 1 million Poles migrated, at least 1 million, more than 1 million Polish people migrated to the United Nations. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country or origin rather than to ethnicity. Now,
These people belonging to Polish migrated to the United States, and the Polish state did not exist at that time in the United States because it was not granted at that time to make residence, to own lands, and to own rights over there, because those people recently migrated to United States of America. Now they were identified as Russian Poles, German Poles, and Austrian Poles. Okay, I mean these three nations involved and mixed there. The people were being organized and identified as Russian Poles, Russia के Polish, and German के Polish, Austrian के Polish. मतलब इन तीन देशों से माइग्रेट होकर वो लोग वहां गए थे. One of the most notable Polish American communities is in Chicago. Chicago अमेरिका की एक जगह है, and its suburbs, जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पे, वहाँ शिकागो में अमेरिकन कम्युनिटीज़ में one of the most Polish people are identified. बहुत सारे पॉलिश से बिलोंग कर रहे लोग वहाँ रहते हैं शिकागो में. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. इसलिए शिकागो को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिश कंट्री के नाम से जाना जाता है या शहर के नाम से जाना जाता है. Next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. Jews का मतलब क्या होता है? यहूदी होता है. ठीक है, तो ये जो लोग हैं, इसके बाद शिकागो के बाद वारसा एक जगह है जो कि पोलैंड का कैपिटल जाना जाता है, राजधानी जाना जाता है. पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड. वहाँ के जो पॉलिश अमेरिकन थे वो कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुआ करते थे अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज. Obviously, discrimination, classification exists everywhere. For example, in our country, there are so many religions and so many castes under each religion. Now, according to the United States 2000 census, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, and lakhs, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. So this is a calculation of Polish people in United States of America, and 1.4%, the people who spoke different language in the United States of America is at least 1.4%. Okay, and this is 0.2% of the USA population. पूरे यूएसए की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, ये उसका 0.25% है. The story revolves around Wanda Petronsky, as you can see today. Now, the story is going to be explained. Today, Monday, it was Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. Wanda Petronsky. First of all, let you create the atmosphere where the scene revolves. This is the scene of a classroom, and there are so many desks and benches. Many students are sitting at their seats, but Wanda Petronsky is a student who was not in her seat, जो कि अपने सीट पर नहीं है. ये क्लासरूम का चित्रण है. आप समझ सकते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे आकर बैठे होते हैं, कोई एक पार्टिकुलर बच्ची या बच्चा उसमें नहीं है, तो उसी बच्चे की बात हो रही है. Now, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. No, Wanda Petronsky, she was not in her seat, but nobody, not even Peggy. Peggy is the name of a student, and Madeline is other student. They started all the fun, noticed her absence.
Okay, as they noticed the absence of Wanda Petronsky, they started poking fun at, passing comments, because Wanda was not there in her seat. She was absent, and these two girls were making, fun and making comments and many more. Who has started his mic? Now, usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. Now, this is the location of her seat and classroom. She used to sit next to the last seat. जो लास्ट सीट हुआ करती थी उसके अगली सीट पर वंडा बैठती थी इन द लास्ट रो और रूम नंबर 13. She sat in the corner. वो कोने में बैठती थी of the room where the rough boys who did not make good marks sat. She sat where bad students who do not deserve to achieve good marks in their examination यूजुअली सैट, वो वहां बैठती थी जहां पे मतलब होता है ना एट द बैक साइड मोस्टली वीक एंड चीप स्टूडेंट्स ऑलवेज सिट, हमेशा कमजोर विद्यार्थी बैठा करते हैं, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं है, बट कॉमनली हम कह सकते हैं द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, that most mud and dirt on the floor, noisy dragging movements of it feet on the ground. Now, on the ground. Now, वांडा बैठती कहाँ थी? वांडा बिल्कुल पीछे बैठती थी. It was, such a place where so many types of sounds, noisy, dragging, movements of the feet on the ground, फर्श पे पैरों के रगड़ने की आवाज़, चहलकदमी की आवाज़, स्टेपिंग की आवाज़, मतलब बहुत शोर हुआ करता था, वहीं पे ये बैठा करती थी. वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ. वंडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी एंड नॉइजी थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि she was very quiet and rarely said anything at all. She was introvert. Okay, she doesn't like to speak most of the time. She always became silent. Okay, वो बहुत ही शांत रहती थी, सज्जन थी, कम बोलने वाली थी, इंट्रोवर्ट थी. Now, and nobody had ever heard her laugh out loud. And she never and ever heard, not heard, laughed. She never made a laughter loudly in the classroom so that nobody heard about her laughter. उसके हंसने की आवाज़ तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. Sometimes कभी कभी ये होता था कि वो थोड़ा सा मुस्कुरा लेती थी. But that was all. लेकिन यही सब कुछ था. I mean, for laughing, it was all. ये सब कुछ था. I mean, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी हंसने को लेकर के, बस थोड़ा सा मुस्कुरा लेती थी. मुस्कुराना भी क्या, थोड़ा सा ट्विच करती थी अपने चेहरे को, जैसे होता है कि आप स्माइली बनाते हैं, ठीक है, इमोजी वगैरह, तो बस थोड़ा सा ट्विच करती थी जिससे हल्की सी स्माइल आती थी ना. नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट, कि वांडा वहाँ क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from, Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. क्या इसलिए कि वो बहुत ही ऊंची पहाड़ियों से होते हुए स्कूल आती थी और उसके जो पैर थे वो बहुत ही मडी थे, बहुत कचरे से मतलब गिरे पड़े, इसलिए वो पीछे ही बैठ जाया करती थी कि अंदर क्लास में आएगी एंड क्लास वुड बी डर्टी एंड मडी. सो शी यूजुअली सैट at the last bench. Now, but no one really thought much about Wanda Petronsky. लेकिन कोई भी उस बच्ची के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था. Once she sat in the corner of the room. एक बार तो वो रूम के बिल्कुल कॉर्नर पे बैठ गई, आई मीन एकदम कोने में, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? The time
When they thought about Wanda was outside of the school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began. When groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. The time, okay, समय, when they thought about Wanda, जब लोग उसके बारे में सोचते थे, was outside of the school hours. ओके, तो ये स्कूल के बाहर की बात हुआ करती थी कि जब भी लोग स्कूल के बाहर होते थे तो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचा करते थे. सबसे कॉमन सी चीज़ ये है कि बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचा करते थे. वाई डू दे थिंक अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की? एक बच्ची के बारे में पूरा स्कूल या स्कूल के बच्चे क्यों सोचते थे? तो इसका रीज़न है that she was different rather than other students in that classroom. She belongs to Polish, okay? I mean Poles जिसको कहते हैं, जो पॉलिश गर्ल्स या पॉलिश लोग होते हैं, वो जर्मन के थे, पोलैंड के थे, ऑस्ट्रिया के थे, आयरिश के थे, मतलब ज्यूज लोग जाने जाते थे. तो ये तरह तरह का जो क्लासिफिकेशन है, ये मजबूर करता है हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट होने का. कॉमनली मान लीजिए हम ही अपने स्कूल में एक ऐसे बच्चे को देखें जो अमेरिका से बिलोंग करता हो, ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करने वाला एक स्टूडेंट आ जाए, बिल्कुल गोरा चिट्टा फेयर, अंग्रेजों को आपने देखा होगा, तो जाहिर सी बात है एवरीबडी, इवन अ सिंगल चाइल्ड, टीचर्स एज वेल, दे वुड बी talking about that student because he would be completely different, more different rather than others. लोगों से तो बहुत डिफरेंट होगा वो. तो बिल्कुल ऐसा ही है जिसकी वजह से उस बच्ची के बारे में लोग बात करते रहते हैं. When groups of 2 or 3, जब भी 2 या 3 लोगों का ग्रुप होता था बच्चों का, even more would be talking and laughing on their way to the school yard, और वो स्कूल यार्ड में या रास्ते में कहीं भी उसके बारे में बात करके हंसा करते थे. Then sometimes, कभी कभी they waited for Wanda. अब ये दे किसको रिफर कर रहा है, ठीक है, अभी आप जान जाएंगे. ये जो दे है वो पेगी एंड मैडी के बारे में बात कर रहा है. मैडलिन पूरा नाम है और पेगी यहाँ पे नाम है, ठीक है. दीज आर टू गर्ल्स, ये दो लड़कियां हैं जो वंडा को बहुत नोटिस करती हैं, ठीक है. टू हैव फन विद हर, ये दोनों लड़कियां वांडा के साथ स्कूल आना चाहती हैं. दे वांट टू स्पेंड enough time with Wanda Petronsky for having talk and fun with her. तो ये जो चीज़ें हैं ये हर बच्चे के अंदर होती हैं कि जब भी वो अपने से डिफरेंट बच्चे को देखते हैं या लोगों को देखते हैं, सो दे आर इंटरेस्टेड टू हैव लुक एंड हैव अ टॉक विद देम. सो Peggy and Maddie, these two students are girl students, belong to America, okay, and that is why they are interested in that different looking girl Wanda Petronsky. The next day, Tuesday, it was Tuesday, Wanda was not in school. Wanda स्कूल में नहीं थी. Either nobody noticed her absence again. और कोई भी उसके absence को notice नहीं करता था. But on Wednesday, बुधवार के दिन, Peggy and Maddie, who sat down front with her children who got good marks. These two girls are studious, okay, and they got good marks in their subjects. What happened next, let you know. Peggy and Maddie, who sat down front with other children, जो कि सामने बैठा करती थी सब दूसरे बच्चों के साथ, who got good marks in their subjects, who didn't track in a whole lot of mud, जो mud से नहीं होते हुए आती थी, I mean उनके जो घर का रास्ता था वो अच्छा था. Did notice that Wanda was not there. वो इस चीज को नोटिस कर रही थी कि वांडा जो बच्ची है वो क्लास में नहीं है आज. She was pretty, वो बहुत सुंदर है. She had many pretty clothes, और उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी हैं. And her hair was curly, और उसके जो बाल हैं वो कर्ली हैं, घुंघराले हैं. Maddie was her closest friend. Maddie वांडा पेट्रोन्स्की की बहुत अच्छी फ्रेंड है. The reason Peggy and Mary noticed her Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. ये इसीलिए ये नोटिस करती हैं क्योंकि cause of Wanda they were late on Tuesday. वो ट्यूसडे के दिन लेट थी, ठीक है. They had waited.
उन्होंने इंतजार किया था, वांडा का उन्होंने इंतजार किया। Here they waited for Wanda and waited for Wanda to have some fun with her. वो उस बच्ची का इंतजार की थी इसलिए कि थोड़ा सा रास्ते में मजा आएगा। होता है ना, फ्रेंड्स वेट फॉर अदर फ्रेंड्स ओनली टू हैव फन while they come to school। जब वो स्कूल आते हैं तो रास्ते में रुककर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे का, कि रास्ते में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा। शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वांडा तो आई नहीं, इसलिए पेग्गी और जो मैडी हैं ये दोनों उस दिन स्कूल लेट पहुंची थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रंस्की, और वो अक्सर वांडा पेट्रंस्की का इंतजार किया करते थे, टू हैव फन विद हर, ओनली टू मेक इंजॉय, टू गेट इंजॉय एंड प्लेजर। ये उनको अच्छा लगता था कि वांडा पेट्रंस्की के साथ वो स्कूल जाएं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा एंड आई हैव explained this completely। Okay,